Hey guys, welcome to my channel Lifesciences with Essays. Today I am going to give a brief description about a chapter of immunology, that is antigen, how antigen works in our body, what is the concept of antigen, and all about the antigen. So let's start the topic. Till now, if you have not subscribed my channel, please like, share and subscribe. So in introduction, we will see what the antigen is. Antigen are any foreign substances or molecules. We can see here foreign तो कुछ भी होता है, मतलब हम जो चावल दाल खाते हैं वो भी तो foreign होता है. तो क्या वो एंटीजन है? नहीं, इसका आंसर है नहीं, वो एंटीजन नहीं है. The substances or molecule which enters the body and triggers the generation of antibodies, सिर्फ वही एंटीजन कहलाते हैं जो हमारी बॉडी में जाकर एंटीबॉडीज के जनरेशन करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, उसे हम एंटीजन कहते हैं. It can also be defined as any substances or molecules that bind to specific antibody or specific antigen receptor on lymphocytes. So this is known as antigen. And what is antigenicity? The property that allows the substances to combine specifically with antibodies or T cell receptor whether or not they are immunogenic. See, antigenicity is not same as immunogenicity. It's the only property that allows to combine specifically with antibodies or T cell receptors. Understand? So what is our immunogen? This antigen and immunogen are both a bit different. They have a bit difference. So the ability to induce humoral or cell-mediated immune response is called as immunogen. And what is the nature of chemical nature of antigen? We can see here antigens or immunogens include a variety of molecules such as protein, polysaccharide, phospholipids, nucleic acid. These are known as antigens or immunogen. Even sometimes lipid can cause also the lipid are comes under a group heptin, but sometimes lipids also become antigens. If we see the order how they cause antigenic or how they evoke immune response, so highest number will be of protein, then polysaccharides, then nucleic acid, and then last will come as lipids. Lipid is very lightly immunogenic. So even simple intermediary metabolites, sugar, hormones, autocoids, lipids, there also can be antigens. So here you can see protein, that is a vast majority of proteins are good immunogens due to their large molecular size, heterogeneity and complexity. We can find protein in very large molecular size. They have very large molecular weight, and obviously they are heterogenic and complex structure. And about polysaccharides, pure polysaccharides and lipoproteins are good immunogen. And nucleic acid are poorly immunogenic. They don't evoke immune response like protein. And about lipids in general, they are non-immunogenic, although they may be hapten. They can come with any other protein or polysaccharide to cause an immunogen, to be an immunogen. And about the structure of antigen, what is the structure of antigen? It must have a receptor to which antibody will bind. So specific region or chemical group of antigen molecule that can bind specifically to paratope. This paratope is present in antibody, and ये antibody के साथ जब ये antigen bind करता है तब इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. एंड ये रीजन को हम क्या बोलते हैं? जो रीजन से एंटीबॉडी आके बाइंड करता है वो रीजन को हम बोलते हैं एपिटॉप्स और डिटर्मिनेंट्स और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स. एंटीबॉडी के टी सेल रिसेप्टर के साथ जो मॉलिक्यूल एंटीजन के बाइंड करता है वही स्पेसिफिक जगह को हम बोलते हैं एपिटॉप या डिटर्मिनेंट्स और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स. यहाँ तक क्लियर है? So epitope, this epitope is present as maybe as linear. They may be present in single line. See, here you can see it. इधर आप देख सकते हैं ये लॉक एंड की सिस्टम में प्रेजेंट होता है. ये एपिटॉप है और इसके साथ जो बाइंड करता है एंटीबॉडी के, ये पैराटॉप है. इट इज लॉक एंड की सिस्टम. So it may be linear or sequential epitope.
Antigens such as bacteria or viruses may carry different types of epitope presenting an antigenic mosaic. They have a system of epitopes, and that is called as antigenic mosaic. And about the types of antigen, on the basis of immune response, antigen are of two types, that is complete antigen and incomplete antigen. फ्रॉम नेम यू कैन सी कंप्लीट एंटीजन क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जाकर कंप्लीट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक करता है, प्रोवोक करता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है और एंटीजन के साथ फाइट करता है और किल करता है, वो कहलाता है कंप्लीट एंटीजन. इट इज एन इम्यूनोजन दैट कैन इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एंड ऑब्जर्वेबल रिएक्शन. We can see that reaction, we can feel that reaction with antibodies so produce. And incomplete antigen क्या होता है, वो हेप्टेन होता है, हेप्टेन और हेप्टेन के जैसे कंपाउंड्स होता है, light molecular weight. These are substances that are incapable of inducing antibody formation by themselves but can react specifically with antibodies. It can react with antibodies but it can't produce immune response. So on the basis of और ये हो गया हमारा on the basis of immune response of an antigen. और ये आता है on the basis of origin. Antigen are classified into these following types. और क्या हो सकता है, exogenous antigen. exogenous क्या होता है, जो बाहर से आता है, name suggests this, exogenous बाहर से आता है. exogenous ये होता है कि these are foreign or non self antigen that enter to the body from outside. एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम, इंजेक्शन ऑफ ट्रांसफ्यूज ब्लड सेल, ये भी तो हमारा बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है ना. और एंडोजेनस एंटीजन क्या होता है, ये एंडोजेनस एंटीजन जो अंदर की है, आइदर वो म्यूटेट हो गया है और हमें जिससे दिक्कत हो रहा है, हमारा बॉडी का ही है पर हमें जिससे दिक्कत हो रहा है, जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्या है वो, these are native or self antigen which generated by own body or cells due to abnormal physiology or infection. You can say this as mutation also. समझ में आई बात. Then what is autoantigen? क्या होता है ये? An autoantigen is usually a normal protein or a complex of protein that is recognized by immune system of patients suffering from specific autoimmune disease. Example you can see that our glomerulonephritis, that is also an autoimmune disease, and that is called as autoantigen. And about alloantigen, what is alloantigen? An alloantigen is genetically determined antigen such as histocompatibility or red blood cell antigen that is present in some but not all individuals of a species and capable of inducing production of an alloantibody by individuals which lack it. And this alloantigen is also called as isoantigen. Understanding? Then tumor antigen. What is tumor antigen? This name suggests it's a tumor. Tumor antigen is a protein or any molecule produced during mutation or tumor development in a normal cell. And neoantigen is it is often associated with tumor antigen and are found in oncogenic cell, जो हमारी बॉडी में सेल्स प्रोड्यूस करता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल प्रोड्यूस करता है, उसी में हमारा ऑटो एंटीजन फाउंड होता है जो ट्यूमर रिलेटेड होता है. और सुपर एंटीजन क्या होता है, इसके बारे में हम आगे लास्ट को पढ़ने वाले हैं, सुपर एंटीजन. एंड ब्लड एंटीजन इज द एंटीजन दैट आर प्रेजेंट इन ब्लड. that antigen also produce a immune response in our body. कभी कभी ये एक्सोजेनस के अंडर भी आ सकता है. कभी कभी हम जब ब्लड लेते हैं वो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है क्योंकि वो हमारे हमारे जो ओन ब्लड होता है उससे मैच नहीं करता है. And another is cross reactive antigen, and this antigen doesn't react with can't react with our some antigen also present in our body which don't cause immune response, and ये cross reactive उनके साथ bonding करता है. And about the factors influencing immunogenicity, क्या क्या फैक्टर immunogenicity प्रोड्यूस करता है. So एक होता है properties of immunogen, वो क्या होता है, molecular size. मॉलिकुलर साइज 10 kb से जो ऊपर होता है, 10 kb उससे जो ऊपर होता है वो मॉलिकुलर साइज हमारा क्या इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है. एंड केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन एंड हेट्रोजेनिसिटी.
इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जिसके लिए हमारा जो प्रोटीन हो सकता है, हमारा लिपिड हो सकता है, हमारा लिपिड लिपिड तो लो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ये सब आ जाएगा केमिकल कंपोजिशन एंड हेट्रोजेनिसिटी अंडर के. So foreignness, susceptibility to antigen presenting and presentation with MSC molecule. This will we all study. What is molecular size of immunogenicity? Generally, substances with molecular mass less than 5,000 to 1,000 Daltons, 10,000. Sorry, it is mistakenly written. This is 10,000. And generally substances with molecular mass less than 5,000 to 10,000 Dalton are poor immunogens, and the substances exceeding 10,000 Daltons are most active immunogens. They are very active immunogens because of their high molecular size. And low molecular weight substances may be rendered antigenic by absorbing them a large inert particle such as bentonite or kaolin. ये जो लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस होता है वो तो इतना इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते. वो क्या होता है, वो किसी और इनर्ट पार्टिकल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाता है, लग जाता है, जुड़ जाता है. वो क्या होता है हमारा, वो इनर्ट पार्टिकल्स दैट मे बी बेंटोइन, काओलिन और कुछ अदर्स भी होते हैं. And some low molecular weight substances may be antigenic when applied on skin, probably by combining with tissue proteins. कुछ कुछ लो मोलिकुलर वेट की होते हैं जो हमारा हम कोई भी क्रीम बॉडी में अप्लाई करते हैं. क्या सभी सूट करता है? नहीं करता है, क्योंकि वो जब हमारे टिश्यू प्रोटीन के साथ मिल जाता है वो कुछ अलग सा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है. एंड अबाउट द केमिकल कंपोजिशन एंड हेट्रोजेनेसिटी. Immunogens are heteropolymers composed of different types of amino acid and sugars which are influenced by molecular weight. सबका तो molecular weight होता है ना, तो इसी के हिसाब से हमारा chemical composition होता है. जो जिसका ज़्यादा होता है वो ज़्यादा immune response produce करते हैं, जिसका कम होता है वो कम immune response produce करते हैं. And most naturally occurring antigens are protein, polysaccharide. These are combination proteins and polysaccharides and lipids and nucleic acid. एंड ये दोनों से लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड कॉम्बिनेशन में जो आता है वो लेस एंटीजेनिक है, और प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड जो आता है वो हाईली इम्यूनोजेनिक है. And macromolecules that cannot be degraded and presented with MSC molecules are poor immunogens because the degradative enzymes with APC, this is antigen presenting cell, can degrade only proteins that containing L amino acid. L amino acids means you can see L means laboratory. This amino acid tends to move left. This is optically active compound, and polymers of D amino acid cannot be processed. D क्या होता है? This is lever rotatory and this is dextro rotatory. And about foreignness क्या होता है? In order to elicit immune response, a molecule must be recognized as non-self or foreign. कब हमारा immune response होता है? जब हम उसे non-self recognize करते हैं, वो हमारी अंदर का कुछ नहीं है, वो बाहर का ही है, तब immune response produce होता है. तो यही होता है foreignness. An individual does not normally mount an immune response against his or own normal constituent antigen. जो अंदर के एंटीजन होता है उससे बॉडी कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करता है. एंड दिस वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय एलरिच, a scientist Elrich, who proposed the concept of horror autotoxic, fear of self poisoning. कुछ हमारा बॉडी में म्यूटेशन आ जाए तो वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है ना, उसके लिए बॉडी टॉक्सिक हो जाता है. दिस इज सेल्फ पॉइजनिंग. And greater the phylogenetic distance between two species, greater will be the structural disparity between them. See, इधर आप क्या देख सकते हैं, जो हमारी सी अगर माउस से कोई भी एंटीजन आ रहा है और क्या बोल सकते हैं हम, हमारा कोई चींटी हो क्या कोई बर्ड हो, वो ज़्यादा कोई बर्ड हो या फिर कोई माउस हो, वो दोनों में हमारा क्या किससे अगर कोई एंटीजन माउस से आ रहा है तो वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा या कोई एंटीजन बर्ड से आ रहा है वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा. तो हम यहाँ पे फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस देखते हैं. हमारा जो इवोल्यूशन होता है हमारा स्ट्रक्चर माउस से रिलेटेड होता है, हमारा बॉडी का कंपोजिशन, इसलिए हमारा जो भी निकलता है पहले माउस के ऊपर रिसर्च किया जाता है. तो हम माउस से जो आता है वो हमारे लिए कम इम्यूनोजेनिक होगा इन कंपेयर टू बर्ड. For example, BSA would be more immunogenic in rabbit
than when injected into a cow because of disparity between the two species. Here, this is the best example you can see. PSA would be more immunogenic in a rabbit than when injected to a cow because of disparity between two species. And about genetic variability, this is comes under properties of biological system. Let's see something back. Uh, Here you can see factors immunogenicity में क्या आता है, properties of biological system में host genetic makeup कैसा होता है जिसमें immune response produce होता है, and doses and route of administration, कितना डोज में हम देते हैं और वो किस रूट में जाता है, and use of adjuvants to enhance immunogenicity, कुछ एडजुवेंट्स कुछ इम्यूनोजन के साथ कुछ मिला के हम छोड़ते हैं तो उसे एडजुवेंट्स कहते हैं इन सिंपल टर्म्स. सो ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होता है, ये पे देखते हैं. द जेनेटिक मेकअप ऑफ immunized organism can influence the degree and type of immune response. एग्जाम्पल क्या होता है, द MSC जीन एनकोडिंग MSC मॉलिक्यूल्स, द जीन एनकोडिंग B cell receptor and T cell receptor are important genetic properties of biological system that determines immunogenicity. समझ में आ रहा होगा ये बात. And experimental findings suggest that MSC genes show high degree of polymorphism. ये high degree of polymorphism show करता है, and therefore MSC molecule needed for presentation and process antigen to T cells determine the degree of immune responsiveness. ठीक है, ये T cells की वजह से ये degree of immune responsiveness हमारा वही डिटेक्ट करता है. एंड डोज एंड रूट्स क्या होता है, किस रूट में हम उसे छोड़ते हैं, किस रूट में वो जाता है वही देखते हैं ना. और डोज क्या होता है, हम इतना एंटीजन छोड़ेंगे तो ये इतना इम्यून रिस्पॉन्स देगा, हम ज़्यादा एंटीजन छोड़ेंगे तो वो ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. ये होता है एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, कितना रेट में वो लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है. दिस डिपेंड्स ऑन डोज. एंड रूट इज आई एम टेलिंग कौन से रूट में वो जाता है, कहाँ किसको वो अफेक्ट करता है ज़्यादा, किससे वो इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. ये होता है डोज एंड रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एंड इम्पोर्टेंट इज एडजुवेंट. एडजुवेंट क्या होता है, एडजुवेंट वो होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करता है व्हेन मिक्स्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड विद एंटीजन, एंटीजन के साथ ही जाता है और इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करता है. दिस आर कंपाउंड्स दैट, so it is an writing mistake, that is here that adjuvants are the compounds that boost the immune response when mixed and administered with antigen. Example क्या होता है हमारा synthetic polyribonucleotides. And about the biological class of antigen, antigen के दो class होते हैं, वो क्या होते हैं, T cell independent antigens and T cell dependent antigen. ये क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, कोई T cell के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई T cell के ऊपर इंडिपेंडेंट है. तो क्या होता है वो T cell antigen? The antigen which can directly stimulate the B cell to produce antibody without the T cells help are called as T cell independent antigen. जो एंटीजन डायरेक्ट बी सेल को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने को विदाउट द हेल्प और विदाउट द इंटरफेयर ऑफ टी सेल, दैट इज कॉल्ड एज टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन. ये होता है टी सेल का. और मोस्ट नेचुरल प्रोटीन्स आर टी सेल डिपेंडेंट. सो इंडिपेंडेंट में क्या आ जाएगा, हमारा एंटीजन कैन डायरेक्टली सॉरी सम एंटीजन कैन डायरेक्टली स्टिमुलेट बी सेल्स. इसमें एग्जांपल क्या आता है, टी पार्टिसिपेशन सच एंटीजन आर कॉल्ड एज टी आई एंटीजन, यू कैन से द टी आई एंटीजन. और टी सेल डिपेंडेंट क्या होता है, T cell dependent antigen are those that require the help of T cell to initiate immune response and antibody production. ये T cell के ऊपर खुद पूरा डिपेंडेंट हो जाता है immune response initiate करने को, even to initiate. They are called as T cell dependent antigen. Here you can understand, जो टी सेल डिपेंडेंट है वो टी सेल के डिपेंड करके इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, और जो टी सेल इंडिपेंडेंट है वो सिर्फ बी सेल से ही इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ टी सेल. अंडरस्टैंडिंग. देन कम सुपर एंटीजन. क्या होता है ये सुपर एंटीजन,
These are microbial protein that cause massive non-specific activation of T cells, resulting in polyclonal T cell activation. कुछ ऐसा एंटीजन जो टी सेल को ट्रिगर करता है ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा टी सेल पॉलीक्लोनल टी सेल करने के लिए, ताकि ज़्यादा इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सके. So super antigen binds simultaneously to T cell receptor and class 2 MSC molecules. This non-specific binding activates into lymphoproliferative phase of T cells. See, in lymphocyte T cell का बहुत ज़्यादा production होता है, and which induces pronounced cytokine production by T cells in vivo, and thereby causing a various pathological consequences. क्या देख सकते हैं, हमको फीवर हो सकता है, मैलाइज हो सकता है, डायरिया हो सकता है, बहुत सारे ऐसा हो सकता है. सो ये था एंड ऑफ दिस सेशन. And if you find this video profitable, then please like, share and subscribe. Thank you.